हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। हम जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स होते हैं हम उनको जो क्लासीफाई करते हैं बेसिकली 4 कैटेगरी में करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द नाइट्रेट्स, सेकंड वन इज कॉल्ड द बीटा ब्लॉकर्स, थर्ड इज कॉल्ड द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड फोर्थ इज द पोटेशियम चैनल ओपनर्स। सो बेसिकली हैव टू कीप इन माइंड, कैल्शियम चैनल को हम ब्लॉक करते हैं और पोटेशियम चैनल को हम ओपन करते हैं। तो बेसिक जो मैकेनिज्म है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नीचे सब्सक्राइब बटन क्लिक लीजिए ताकि आपको आने वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फर्स्ट वन इज द नाइट्रेट्स। सो फर्स्ट लेट्स सपोज द टेक टू रिमेंबर द एंटी एंजाइनल ड्रग एज प्रोमिस्ड इन द थंबनेल। सो एंटी एंजाइनल ड्रग का क्लासिफिकेशन तक याद करने का तरीका है, वन वर्ड में आपको पूरा याद हो जाएगा। एक्चुअली वन स्टेटमेंट में दैट इज द एंटी एंजाइनल ड्रग्स आर गिवन एट नाइट before commensal of pain। एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है बट ये आपको एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्लासिफिकेशन याद करने में हेल्प कर सकता है। तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्लासिफिकेशन कैसे याद करनी है? इट इज दीज आर ड्रग्स गिवन नाइट बिफोर commensal of pain। नाइट स्टैंड फॉर नाइट्रेट्स, B4 stands for beta blockers, C stands for actually the commensal stand for calcium channel blockers and P stands for potassium channel openers. Okay, so first of all let's start with the nitrates. Nitrates is again divided into two categories, short acting and long acting. Basically we have to check out the number of nitrate molecules in the given compound or given drug. First one we have the trinitrate, that is a crystalline trinitrate. In the dinitrate category, we have the isosorbide, which is short acting and given sublingually. No, please keep in mind, isosorbide dinitrate can be given sublingual as well as it is given orally. Okay, so when it is given sublingually, it is short acting, but when it is given orally, it is act for a longer duration. So from trinitrate, we move on to dinitrate. In the long acting, again we have the mononitrate, that is the same isosorbide mononitrate. Then from mono to again we are increasing the number, firstly 3 2 1, then again we are increasing the number of the nitrate molecules, that is the isosorbide dinitrate given orally. Oral drugs act for longer duration while sublingual drugs act for shorter duration. You have to keep in mind, S stand for sublingual and S stand for short. Okay, then we have the erythryl tetranitrate. See, from 2 it's moved on to the 4 molecules of the nitrate. Then we have the pentaerythritol. See, here it is erythritol and here it is erythritol, pentaerythritol tetranitrate. So these are the all the nitrates that we remember in the case of the anti angina drugs classification. Next one is the beta blocker. Beta blockers we have already discussed in the ANS, metoprolol, propranolol, atenolol, acetolol. All the beta blockers we have already discussed. So we have again just two important names, metoprolol and propranolol. Rest you already know. What about the calcium channel blockers? These will be separate video for the calcium channel blockers, but आपको मीनू लग याद रखना है, दो सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं फ्रेम्पामिल और डिल्टियाज़म। ओके, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है जब हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से बात करते हैं। इसके अलावा जो बाकी जो 5 हैं, दैट्स वी कैन रिमेंबर बाय द निमोनिक। ब्लैंक की स्पेलिंग थोड़ा अलग है, इसमें सी के की जगह सी है। ओके, BLANC। तो वी हैव which drugs? Benidipine, lecidipine, amlodipine, nifedipine and cilnidipine. So actually when we are discussing about the calcium channel blockers in detail, I will tell you that it is divided into 3 categories: phenylalkylamine, benzodiazepine and dihydropyridines. So dihydropyridines are basically the dipines. So all these 5 drugs comes under the category of dihydropyridines, dipine. So they come under the category of dihydropyridines. While verampanil is a phenylalkylamine and this diltiazem is benzodiazepine. Okay, now what are the potassium channel opener? There is only one drug that you should know, that's a nicorandil. Okay, nicorandil is the important drug of the calcium channel opener. And if all these drugs are not working, the other drugs must be tried. सो जो अदर ड्रग्स हैं इनका ट्रिक भी बहुत सिंपल है, ट्राइड की स्पेलिंग थोड़ी अलग है, इसमें ध्यान दीजिएगा। T स्टैंड फॉर ट्राई मेटाजिडिन। ठीक है, ये तो सिंपल याद करें, ट्राई मेटाजिडिन। R स्टैंड फॉर रेनोलाजिन। I स्टैंड फॉर इवाब्रिडिन।
Bredin, and D stands for dipyridamole. Okay, so these are the other drugs of the anti-angina classification. So actually what all we have studied till now, that for the anti-angina drugs we give drugs in the night before commensal of pain. So we have nitrates, beta blockers, calcium channel blockers, and potassium channel openers. And if these all drugs don't work, we use other drugs which must be tried, that are the trimetazidine, ranolazine, ivabradine, and dipyridamole. And nitrates we have again two categories, short acting and long acting. Basically you have to check the number of nitrates, 3, 2, 1, then again 2, 4 and 4. Desaid trinitrate, isosorbide dinitrate, then again we have isosorbide mononitrate, and again we have isosorbide dinitrate. We have to remember sublingual act for shorter duration, while with the other drugs act for a longer duration. Beta blockers we have already discussed, and calcium channel blockers we will discuss in detail. But meanwhile, the most important drugs are the virampamil and diltiazem. Apart from that, the dihydropyridines groups we use the dipin, and the tip to remember is blank, bendipine, and all the drugs of the calcium channel blocker. Potassium channel blockers, we have just one drug you should know, that's nicorandin, and other drugs I have already told. So if you like the video, please hit the like button and do subscribe to our channel. Thanks for watching.